Hello students, today we are going to start intramolecular force. Earlier we have studied only inter and intramolecular force in last class. Within the molecule एक ही molecule हो और उसी में ही जो attractive force occurs, that is known as intramolecular force. The intramolecular force are responsible for chemical properties of the substance. Thermal energy is there. It is arises due to movement of atom in a molecule, right? Movement of atoms जो movement होगा, that is thermal energy. Thermal energy is directly proportional to temperature. As temperature increases, thermal energy will also increase. That is correct. As the temperature बढ़ाएंगे तो thermal energy भी बढ़ेगी. The thermal energy is predominating in gas compared to liquid and solid. Means कि thermal energy gas में जल्दी से react होगी as compared to liquid and solid. The advantage of thermal energy that it keeps the two atoms or two molecules away from each other. Thermal energy, it keeps the two atom or a molecule to away from each other, but as we give the temperature, it comes in contact. Some important gaseous laws are there, that is Boyle's law at constant temperature. In this you listen, when you will get the PDF you will understand. Laws are there. Boyle's law means at constant temperature one thing it will be constant, that is Boyle's law. In that Boyle's law, temperature is constant. The volume of gas is inversely proportional to pressure. First thing in Boyle's law, what is it? टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है और वॉल्यूम और प्रेशर दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, राइट? तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा के, राइट? नाउ हियर and that K is proportionality constant depends upon amount of gas there, so we can write it as PV is equal to K लिख सकते हैं और P1 is equal to V1 is equal to P2 is equal to V2 होता है. ये चीज़ आपको बॉयल्स लॉ में लिखना होता है. नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर. देखो फर्स्ट बॉयल्स व्हाट इज कांस्टेंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड एंड व्हाट इज गोइंग inwards and what is going directly proportional. In this, pressure is constant, but volume and temperature, they are directly proportional to each other in Charles' law. For each degree increase in temperature, the volume of gas is increases by 1/273 times of the volume at 0 degree centigrade. In that there is an explanation. Let us assume that the volume of gas at 0 degree centigrade is V0. The volume at T degree centigrade means कुछ टेम्परेचर दिया है, उस पे जो गैस का वॉल्यूम है वो कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड. Then the equation is VT is equal to V0 plus V0 into कितना टाइम T by 273. सिंपल उसको मैथमेटिक्स में सॉल्व करना है. V0 कॉमन ले लिया है और 1 प्लस T बाई 273. VT इज इक्वल टू V0 273 LCM लिया है. उसके बाद इट विल सेपरेट करना है, देन यू विल गेट द T बाई 273 एंड दैट 273 बाई T इज केल्विन स्केल एंड V0 एट 273 इज कांस्टेंट. V0 जो है वो कांस्टेंट रहेगा. तो इससे इक्वेशन मिलेगी VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, राइट? अब जो प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो K लगेगा, राइट? अब T नीचे आ गई इज इक्वल टू K एंड यू विल गेट द इक्वेशन V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2. द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ अ गैस सपोज टू बी जीरो इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो. एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब कि जो टेम्परेचर पे वॉल्यूम जीरो रहेगा उसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलेंगे. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर. अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट जीरो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी
वॉल्यूम ज़ीरो नहीं है, राइट। टेम्परेचर ज़ीरो रखेंगे तभी भी वॉल्यूम कुछ तो होगा। when the scale is extra plotted, it was observed that it is touching the x-axis at minus 273 degrees centigrade, which is known as absolute temperature. टेम्परेचर नहीं देंगे तो भी कोई वैल्यू दिखाता है दैट, और वो जो एक्स एक्सिस में टच कर रहा है उसका वैल्यू है -270 डिग्री सेंटीग्रेड. दैट मीन्स इट इज known as absolute temperature. Here another graph representation of Charles' law is also there. A graph is plotted between temperature and volume at constant pressure. इसमें क्या है, प्रेशर को कांस्टेंट लिया था. This graph is known as isobaric graph. It shouldn't be zero. And okay, today we will keep up to here. If you are not understanding, we will take it as an properly video form, but you try, you will understand, I think. Okay, thank you.